salutation to the God. God means full of pleasure. God means always full of pleasure. Uh, we can know this from the example of dream of night dream, because the experience of the night dream and the experience of daytime, uh, both a dream, night dream, day dream, both dream same. Upanishad, according to Sanskrit Upanishad, Vedanta philosophy says like this. Vedanta, conclusion of Vedas, that is Vedanta philosophy or Upanishad philosophy, says that the experience of night dream and the day dream same, not different. Because when we go night dream, we forget the daydream, and when we come daydream, then we forget night dream. At the time of night dream, there is truth. When we come here in the daytime, we forget. We say the experience of night dream false. Again, when we go to night dream, at that time we don't know about daydream. We think, we say that the experience of night dream is true at that time. So, the spiritual book, top spiritual book, that is Vedanta. Vedanta says both dream same. Both dream same. So, we should not follow the dream. We should follow only the experience of the God. Because God is truth. God is always. God means pure consciousness. Our pure consciousness. We can know this from teacher, old teacher, the famous old teacher, Ashtavakra. He says truth for us. He says the facts, which is always truth. He says that according to Sanskrit, Yatra Vishwam Idam Bhati. Yatra Vishwam Idam Bhati. It means there where we feel oral, there where we feel oral, that is imagination. That is only imagination. For example, the example of snake upon the rope. The example of snake instead of a rope. So, the dream, either daydream, either night dream, the same dream,
Uh, the night dream is our production, individually production, night dream, personally production, night dream. And the daydream, due to the uh, help of uh, God means Mayavi God. According to Sanskrit, Mayavi God. Maya related God. Uh, Maya related God. The word of Maya, Sanskrit or Hindi, Nepali, same. Maya. Maya be Ishwar. God relating Maya has produced this oral, day oral. So, night dream and daydream. Night dream personal production and a daydream from the help of Mayavi Ishwar. God related unknown means agyan, means avidya. Avidya gata Ishwar, according Hindi, Nepali, avidya gata Ishwar, Maya gata Ishwar, agyan gata Ishwar, God related ignorance, related Maya, avidya, has produced the world, which is the nature of always tensions, always troubles. The culture of death and birth. That also imagine upon God. Imagine upon God. Likewise, snake upon the rope. So, from this point of view, we never can believe upon the world due to the result of imagination, due to the dream, either daydream or not dream. The both are within dream. Dream is a result of imagination upon the God. Instead of God, the world has come. So, world always false, truth only God. So, Ashtavakra says, our immortal nature, that Ananda Paramananda. Ananda Paramananda Sabodha Tom Sukham Tara, according to Sanskrit. So, Ananda Paramananda, always full of pleasure. Our immortal nature is full of pleasure. Now, according date, now means 2025 New Year, first month January. First month January, today 20, Monday. According Hinduism, Magha Krishna Paksha Shashti Tithi, Swambara. According Nepali date, Nepali Bikram Samvat date 2081, month Magh, and date 7, Swambara. Now this
we are telling, listening from Nepal country. Nepal, Bhairava city, Parasi city, Palpatansen city, Butol city, through radio FM, presenting by President of Immortal Pleasance Center about now we are telling, listening about the truth, always truth, forever truth, which our concern is, our real concern. Our real concern is with God, which is always, which is full of pleasure. We can know this according the most famous teacher, world teacher, Ashtavakra. Now I say in Indian Hindi language and Nepalese language. अभिवादन परमात्मा को, परमात्मालाई अभिवादन। परमात्मा असली हम लोगों का स्वरूप है। ये सपना जगत, सपना विपना हम लोगों का यथार्थ स्वरूप नहीं है। रात का सपना और दिन का विपना दोनों ही सपना है। ये दोनों ही कल्पित है। ये जो कल्पित है परमात्मा में कल्पित है। परमात्मा हम लोगों का असली स्वरूप है, जहां ये कल्पित है इसलिए ये सब मिथ्या है। सत्य है परमात्मा। परमात्मा का मतलब है आनंद, परमानंद, बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, परब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, आनंद घन स्वरूप, जो भी कहें यह है परमात्मा का वर्ण, जो हरदम है। लेकिन जो स्वप्न का संसार और दिन का संसार दोनों ही कल्पित है। जैसे रसरी में, रसरी का अज्ञान से सांप दिखाई देता है, लेकिन रसरी जानने से सांप जो दिखाई देता है वो भ्रम नष्ट हो जाता है हरदम के लिए। वैसा ही परमात्मा जो आनंद परमानंद है, इसी में कल्पित है दिन का संसार, रात का संसार। रात का संसार अपना निजी संसार है, व्यक्तिगत निजी उत्पादन है। और ये जो दिन का जो सपना है, ये है मायावी ईश्वर का। मायावी ईश्वर ने खड़ा किया है हम लोगों का प्रारब्ध अनुसार। हम लोगों का प्रारब्ध के अनुसार जो है मायावी ईश्वर, वही खड़ा कर रहा है। जो रसरी में जैसा सांप कल्पित होता है, वैसा ही कल्पित है ये दिन का संसार और रात का संसार, दोनों ही सपना है। लेकिन हम लोगों का जो स्वरूप है वो आनंद परमानंद है, जो बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, परब्रह्म स्वरूप है, जो अमर है, आनंद ही आनंद है। यही कहते हैं विश्व गुरु अष्टावक्र जी ने। यही भन्नुहुन्छ विश्वगुरु अष्टावक्रले। के भन्नुहुन्छ भने यत्र विश्वम इदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद स बोध तोम सुखम चर। भनेको मतलब जहाँबाट यो संसार हामीले देखिरहेका छौं, यो त हो डोरीमा कल्पित सर्प झैं। त्यसकारणले यस्तो भ्रमरूपी संसार शरीरमा विश्वास गर्न हुँदैन, जसले कुनै बेलामा पनि धोका दिन्छ। किनकि धोखाको नाम हो संसार, धोखाको नाम हो भौतिक शरीर। जति बेला पनि जुन निमित्तबाट पनि
जान सक्छ, जान्छ, गइरहेको छ। आजसम्म कसैको शरीर पनि रहिराखेको छैन, इतिहासदेखि वर्तमानसम्म न भविष्यमा रहला। त्यसकारणले किनकि डोरीमा कल्पित सर्प झैँ हो जो हामीले वर्तमानमा संसार देखिरहेका छौँ। त्यसैले आनन्द परमानन्द रूप जो बोध स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप जो शिव स्वरूप जो हो, केवल आत्मस्वरूप, यो हो हामीहरूको असली स्वरूप, जहाँ सुख मात्रै छ, जहाँ आनन्दै आनन्द मात्र छ। यस प्रकारले हामीले सधैँ आनन्दै आनन्द रूपमा आफूलाई उभ्याउनु पर्छ, नत्र शरीरले धोका दिन्छ अनि फेरि जन्मने मर्ने, जन्मने मर्ने, जन्मने मर्ने। अहिले समय समाप्त भएको छ, यति नै गरेर हरिओम तत्सत्।